Hi everyone, welcome back to the channel. So आज की टॉपिक है सेक्शन मॉडल्स फॉर ए वेरियस शेप्स और बीम्स. सेक्शन मॉडल्स फॉर वेरियस शेप्स एंड बीम सेक्शन. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड में ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है. इसके डेरिवेशंस करेंगे फ्यू के लिए, ओनली 4 करेंगे हमें. फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर. फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर सेक्शन. रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या रहेगा? एक्चुअल से सेक्शन मॉडुलस का डेरिवेशन है z. सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला है z इज इक्वल टू the ratio of moment of inertia to the perpendicular distance means I by y. ये मेन है. अब डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट ये है सेक्शन मॉडुलस आएगा. सो हमें रेक्टेंगुलर को करेंगे न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज विड्थ एंड दिस इज d by 2 and d by 2. सो z is equals to what is the मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर को? bd cube by 12. And what is the perpendicular distance? d over 2. 2 ones 2 6, d ones d square, that is equals to bd square by 6. This is a bd square by 6 is a section modulus for a rectangular section. Okay, similarly halo rectangular sections को देखेंगे. halo rectangular सेक्शन. हैलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस को क्या आएगा हमको? इसमें 2 डायमेंशंस आएंगे, आउटर एंड इनर. सो ये स्मॉल भी आएगा, ये कैपिटल भी आएगा, ये कैपिटल डी आएगा, ये स्मॉल डी आएगा, इधर भी न्यूट्रल एक्सिस आएगा. सो सेम फार्मूला z इज इक्वल टू आई ओवर y. आई क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए हैलो रेक्टेंगुलर इज 1 by 12 कैपिटल B कैपिटल D क्यूब माइनस स्मॉल b d क्यूब. सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कैपिटल B d क्यूब माइनस स्मॉल b d क्यूब बाय 12 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ओवर 12 मीन्स d 1 जा d 6 जा. सो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस इज 1 ओवर 6d कैपिटल B d क्यूब माइनस स्मॉल b d क्यूब. ये क्या होगा हमको? रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस फॉर ए हैलो रेक्टेंगुलर. नेक्स्ट आएगा सर्कुलर को देखेंगे. नेक्स्ट सर्कुलर सेक्शन. सर्कुलर सेक्शन के लिए भी क्या आएगा? z is equals to I over y. I means moment of inertia for a circular, how much? Pi over 64 d power 4 by perpendicular distance d over 2, diameter by 2 means d by 2. So 2 ones are 2 32s are d1 d cube. So required section modulus for a circular section is pi by 32 d cube. Pi by 32 times d cube. This is a section modulus for a circular section. And last one is halo circular section. हमें फाइंड आउट करना है सेक्शन मॉडुलस फॉर ए हैलो सर्कुलर सेक्शन. सेम फार्मूला, सेक्शन मॉडुलस फार्मूला इज इक्वल टू z इज इक्वल टू आई ओवर y मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इसका? पाई ओवर 64. हैलो मीन्स 2 डायमीटर्स आते मीन्स कैपिटल D पावर 4 माइनस स्मॉल d पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कैपिटल डायमीटर बाय 2 मीन्स कैपिटल D बाय 2. 2 1 जा 2 32 जा मीन्स z इज इक्वल टू पाई बाय 32 टाइम्स कैपिटल D इंटू कैपिटल D पावर 4 माइनस स्मॉल d पावर 4. सो सेक्शन मॉडुलस फॉर ए हैलो सर्कुलर सेक्शन pi by 3 32d into capital D power 4 minus small d power 4
एंड सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस हो गया π/32 इंटू स्मॉल डी क्यूब, एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन का होगा BD²/6, ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में यूज होएगा। एंड हैलो रेक्टेंगुलर क्या होएगा 1/6D टाइम्स कैपिटल D क्यूब माइनस स्मॉल BD क्यूब। सो ये हमको रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस है डिफरेंट वेरियस शेप्स एंड बीम सेक्शंस के लिए।